A cheerful good morning and a very warm welcome to each and every one of you present today in the GK class. As we have already started with the new chapter, and before going ahead with the session or with today's class, again I would like to remind you the same responsibilities which has to be taken by us, our parents, as well as each and every citizens of India. That is, we still have a little bit much more time in coming or in the arrival of the vaccines. So till the time we are not getting vaccinated, or we are not able to we are not getting ourselves vaccinated, we will still have to take some of the precautions. And at the same time, if you would have gone through the newspapers as well, so this vaccine is going to take approximately 3 to 4 months or even more than that to work properly. Okay, so during that period, that is after getting vaccinated, also we will have to take care of the mask as well as the social distancing in order to protect ourselves from this COVID-19, or in order to avoid the same pandemic situation which was little bit earlier few months back. Okay, let us start with our today's class without any delay. Before going ahead with this, again I would like to share you first and the foremost thing today's the syllabus, and thereafter we'll be going ahead. Yesterday also I got one of the request from on my personal window, that is, sir, please tell me or please send me the syllabus of the annual portion. So beta, already the syllabus has been uploaded of your annuals and everything. Please go through it, please have a look over into your school app. Still, if you are not able to get it, then only please try to ask for it. Okay, we don't have any problem, but at the same time, if you want anything, please try to ask the same thing in the query session, because we are not allowed to give the answers in the private window or in the personal window. So it is my humble request, whatever you want to ask, whether it is syllabus or anything, please do ask it in the query session or when the window is open. So yesterday, if you remember, I told you that is these two are the chapters, that is your simple machines and air and water, which is going to be included in your periodic test 2, जो कि अभी कुछ दिनों के बाद होने वाला है, या तो दिसंबर के एंड में या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो भी एग्जाम होगा, दैट विल बी योर यूनिट टेस्ट 2 या पीरियोडिक टेस्ट 2. बात एक ही है, खाली नाम अलग होंगे, बाकी सेम चीज़ें हैं. चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट 2 हो चाहे यूनिट टेस्ट 2 हो, वो सेम ही है. जैसे आपने ये देखा, पीरियोडिक टेस्ट 1 आपने दिया, उसके बाद आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया. इन द सेम वे नाउ यू विल बी गिविंग पीरियोडिक टेस्ट 2, या तो एंड ऑफ दिसंबर और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी, जब भी होगा. आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग योर एनुअल एग्जाम्स विच विल बी आइदर एट द एंड ऑफ फेब, which is going to start at the end of the Feb or in the first week of March. Okay, so let us start. Yesterday, if you remember, we have started with this chapter, that is the sun, the earth and the moon. So today we are going to continue with the same chapter, and let us go ahead with the much more explanation or some more basic facts related to that. Okay, I hope the screen has been shared. Okay, there is no use of this folder now. Okay, so if we go ahead, if you remember, yesterday I told you about all these things, that is sun, which is an example of a star, moon is the natural satellite, earth is one of the heavenly body, or basically one of the planet which is only known to have life on it, but still research are being done to get some more planets which have life on it, so that people can start inhabiting and destroying the other planets as well as we are doing on the surface of the earth. Starting with this, so we have done this part. Okay, we have to just I will have to explain you this part. Okay, already we have started, but still I'm going to explain you again this part. What is this? Okay, so as we have discussed yesterday, that is sun is made up of gases that react vigorously. Okay, now here I would like to explain two things here. अभी जैसे जैसे आप और हायर क्लासेस में जाते जाएंगे, तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फ्यूजन एंड फिजन. ठीक है, इसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ. Okay, so the two different types of reactions are there, that is your fission and your fusion. Okay,
So fission basically means breaking, whereas fusion basically means joining up. Okay, fusion अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि when your liquid is getting converted into solid, that is liquid getting converted into solid, that is not only known as freezing, it is also known as fusion. Okay, fission means breaking, fusion means joining. Okay, so when we are talking about fission, so I told you here just now that is fission का मतलब होता है breaking, whereas fusion means joining. Okay, so in this case whenever here basically we talk about the nucleus. Okay, जब आप atom को अभी और डिटेल में पढ़ोगे तो atom you will be studying about the nucleus which is present inside that atom. ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग पढ़ोगे कि कैसे ये न्यूक्लियस ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, या न्यूक्लियस ज्वाइन अप करते हैं तब कैसे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, सो व्हेन एवर द न्यूक्लियस गेट्स ब्रोकन अप, फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होते हैं आपके सन में, जिसके वजह से इतनी ढेर सारी हीट एनर्जी liberate होती है. Okay, so whenever this kind of reactions occurs inside the sun, that is basically a chemical reaction, that is nucleus gets broken up into two or more than two parts, and when this happens a large amount of heat energy is liberated. In the further explanation it has been given here, that is the outer surface of the sun is having less temperature as compared to the inner surface of the sun. Okay, that is sun के अंदर का जो surface है, if we consider this to be the example of the sun, so the temperature which is present here, that is exactly in the center, okay, will be much more higher as compared to the temperature which is present on the surface of the sun. ठीक है, मतलब अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उससे काफ़ी कम टेम्परेचर उसके सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा. और यही सेम चीज़ अगर आपको याद हो, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में भी. अर्थ का भी जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि आउटर मोस्ट सरफेस क्रस्ट, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, माउंटेन्स हैं, रोड्स हैं, वो काफ़ी ठंडा है. ओके, बट द मोमेंट वी गो लोअर एंड लोअर, ठीक है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं, फिर मैंटल आता है, उसके बाद कोर आता है, तो दिस मैंटल और द कोर्स दे आर वेरी वेरी हॉट रीजन्स. ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो सन में भी, कि सन का आउटर सरफेस दिस इज मच मोर लेस हॉट as compared to the center of the sun or the inner core of the sun which we are talking about. Let us go ahead with some more things. Okay, so here what it has been shown, this makes the center of the sun hotter than its outer region or surface. क्योंकि सेंटर में ही मैक्सिमम रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है एज कम्पेयर टू द आउटर सरफेस ऑफ द सन. This energy travels to the outer regions of the sun from its center. The sun radiates this energy from its surface to the whole solar system. This energy called the solar energy is the main source of energy for us. Okay, तो आपको भी पता है कि of course yesterday only I told you that sun is the only source of energy for us, vitamin D and everything जो मैंने आपको कल बताया था. I hope some of you would have started taking, because I know that each and everyone is not going to do that, but still 1, 2, 3 or whatever may be the number of students, if you are going to follow it, so that will be beneficial for me. That is, I'll be feeling much more satisfied that at least my suggestions are being followed by some or the other students. Okay, and at the same time here when we are talking about, so all of us we know that this sun energy or the energy for the entire planet is provided only by the sun. So जब एनर्जी सेंटर से निकलती है तो वो हर एक जगह जाती है, ठीक है, नॉट ओनली इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स बट एवरीवेयर. ठीक है, अर्थ भी क्या है, आपका एक प्लैनेट ही है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मिलियंस ऑफ डिस्टेंसेस, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, द सनलाइट इज एबल टू रीच फ्रॉम देयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और इसी के वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द फूड, वी विल नॉट बी एबल टू गेट vitamin D, our pigment will not be able to get synthesized, and various other situations are there which will be completely stopped and survival will be very much difficult. Starting with this, okay, starting with the next one, we have the earth. So the earth is the only planet of the solar system. Do we have here something? No. Okay, so the earth is the only planet of the solar system that has life on it. Do you wonder why? The following factors are responsible for life on the earth. Now see,
out of all the 8 or 9 planets, basically 8 planets are there, one has been already removed, okay, from the list. So out of these 8 planets only earth is considered to be suitable for survival. that is एक earth ही ऐसा planet है जिसपे इतने ढेर सारे organisms, plants, human beings and everything they are present. If you talk about other planets, ऐसा क्यों है अर्थ पे, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्दर सेक्शंस, कि ऐसे क्या क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सन की एनर्जी आ रही है प्रॉपरली, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं है इन द सेंस कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं है, यूवी रेज नहीं फॉल कर रहे हैं, ओजोन लेयर है, एटमॉस्फेयर है, माउंटेन्स है, बहुत सारी चेंजेस हैं जिसके वजह से लाइफ का सस्टेनेंस या फिर लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल हुआ है. लेट अस गो अहेड विथ व्हाट आर दीज फैक्टर्स. If we see here, so the very first thing is that the earth has water and water is essential for life. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water. Okay, now 3/4 means basically around 75% or even more than that in the form of oceans, seas, rivers, lakes and ice cap. अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जब हमें बोलता है कि 78% or 75% of the earth's surface is covered with water, but still we have many regions which is present on the surface of the earth which is facing shortage of this water. ठीक है, हमारे अर्थ पे ऐसे बहुत सारे regions हैं, राजस्थान है, desert areas हैं जहाँ पे water की scarcity है. People are not able to get water at proper place. They will have to travel to long distances in order to carry water or bring water for their livelihood purposes. So when we have this much amount of water, then what is the reason for facing this scarcity? ठीक है, ये जो भी हम 75% या 78% of water बोलते हैं, so that is not actually the stored form of water. ठीक है, ये इसमें से maximum water और आपका salty water होता है जो कि हम लोगों ने पहले ही sections में पढ़ लिया है. Okay, so due to this salty water we are not able to utilize it properly. Okay, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि out of this since this earth is having water, so this is one of the main ingredients you can say or main factor for the survival of life. बाकी सारे planets में अभी water का existence नहीं पाया गया है, Mars पे थोड़ा बहुत मिला है और still some other planets also people are still having the research on it, but still proper existence or the amount which should be necessary for the survival has not been supported yet. Okay, so the very first factor is that water is necessary for water is present on the planet earth, that is why life is existing on it. अब देखिए वाटर के यूजेस क्या क्या हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट से. तो प्लांट्स आर यूजिंग दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, उन्हीं का बनाया हुआ खाना हम लोग खाते हैं. ओके, तो दैट इज मीन्स वी आर यूजिंग दैट वाटर इनडायरेक्टली एज वेल एज डायरेक्टली. ठीक है, जो प्लांट्स ने खाना बनाया वाटर को यूटिलाइज करके वो भी हम यूज कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी आर डायरेक्टली यूजिंग द वाटर एज वेल. ओके, नेक्स्ट फैक्टर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फूड चेन. ठीक है, फूड चेन भी हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है, पिछले क्लासेस में, ठीक है, एनवायरनमेंट में या फिर दूसरे चैप्टर्स में. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है, मतलब वाटर एक ही नहीं है. वाटर इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज वेल. मिल्क में भी प्रेजेंट है वाटर. आप कोई भी डिलीशियस फूड आइटम्स बनाते हैं उसमें आपका वाटर का कंजम्पशन है. सो इट मीन्स व्हाट, दैट इज वी आर हैविंग द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इन सम और द अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड इफ दिस वाटर बिकम्स एब्सेंट, सो दैट बिकम्स completely very difficult for us to retain the sustenance of our life or the existence of our life. Moving ahead with this, the second part we have is that is the remaining 1/4 of its surface consists of land. This land has a layer of soil in which plants and animals can live. The second factor which is helping for the survival of the human being is the layer of soil which is present on the earth's crust. जो अर्थ का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, दैट इज द क्रस्ट विच इज देयर, उस पे एक बहुत ही पतली लेयर है, दैट इज सॉइल लेयर विच इज सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. ठीक है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यही ऑब्जर्व करोगे हमेशा. ठीक है, अगर आप जैसे आप नॉन वेज भी अगर हो, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, द पीपल हु आर यूजिंग और कंज्यूमिंग द मीट
and everything, the flesh and everything. Okay, so these flesh or the meat eating persons or these animals which are being utilized as a meat, they are also using the products obtained from the plants only. ठीक है, आप चारा डालते हो गाय को, चारा क्या है, that is nothing but the example of your plants only. Okay, so each and everyone is dependent on this plant life or the presence of plants which are there on the surface of the earth, but still nobody is thinking about it. This is much more सरप्राइजिंग फॉर अस. ठीक है, हम जिसका खा रहे हैं, ठीक है, हम उसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं. ओके, सो दिस बिकम्स लिटिल बिट alarming situation for us, and that is why we are facing some or the other problems now and then. Moving ahead with this, so we have here, okay, so this when we are talking about the second factor, that is the soil which is present. आपको भी पता है सारे के सारे क्रॉप्स सॉइल में ही ग्रो करते हैं. ओके, सो व्हेन द क्रॉप्स आर एबल टू ग्रो, क्रॉप्स मतलब हमारे द ग्रेन्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सब के सब ये धरती पे ही ग्रो किए जाते हैं. और क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि पत्थर पे नहीं ग्रो करेंगे. दे यूज दिस सॉइल, दे ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दे यूटिलाइज दीज न्यूट्रिएंट्स टू गिव अस द ग्रेन्स. ओके, और प्लांट्स जितना भी खाना बनाते हैं उसका बहुत ही एक सिंपल सा पोर्शन या फिर बहुत ही कम पोर्शन वो लोग अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, और मैक्सिमम पोर्शन वो यूटिलाइज हो जाता है और कंज्यूम हो जाता है बाय अदर्स, दैट इज द हेट्रोट्रॉफ्स, चाहे हम और चाहे एनिमल्स. वी आर ऑल्सो वन ऑफ द सिविलाइज्ड एनिमल्स, यू कैन से. ओके, मूविंग अहेड विद दिस, so the third factor is that the earth's atmosphere contains gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide that are essential for life. Okay, now see the third factor. First we have discussed about the water, second was your soil, third is your atmospheric gases which are not only regulating the temperature of the earth's surface, but these gases are also required for the survival. कैसे देखते हैं? बेसिकली तीन मेन गैसेस को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, योर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस चैप्टर एयर एंड वाटर, वी हैव डिस्कस्ड दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन plenty amount. Majority of the earth's atmosphere is having nitrogen, that is 78%. and out of this 78%, मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोजन इज मोस्टली रिक्वायर्ड बाय us or by the plants for preparing proteins. Okay, that is pulses, they contain basically nitrogen only. कोई भी प्रोटीन जो आप यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे वो वेज फॉर्म में या नॉन वेज फॉर्म में, they are containing the nitrogen present in them. Okay, so that is why proteins are required for the proper growth and development. That is why nitrogen is one of the major gases. Second one, the most important one, oxygen, which is responsible for survival only. अगर आप बिना सांस लिए आप नहीं जी सकते हैं, ठीक है, you will not be able to survive without this oxygen. That is the next one. Third one, you cannot live without food as well, and food can be prepared by the plants only when carbon dioxide is present. ठीक है, तो that is why carbon dioxide is your third major gas which is sustaining life or helping in the survival of the organisms present on the surface of the earth. Moving ahead with this, we have the earth receives the right amount of heat and light from the sun, so the earth is neither too hot nor too cold. Now this is okay, here it is, that is just now we have discussed also in the previous chapter as well. Just now also I told you that is the atmospheric gases or the atmosphere, which is a mixture of gases present on the surface of the earth, या फिर अर्थ से कुछ किलोमीटर्स दूर पे या कुछ मीटर्स की दूरी पे ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट हैं, दे आर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. मतलब ये अर्थ के टेम्परेचर को न बहुत ज़्यादा गिरने देते हैं, न बहुत ज़्यादा हाई होने देते हैं. दैट इज द अर्थ नाइदर बिकम्स टू हॉट नॉर इट बिकम्स टू cold, which becomes difficult, so that it may not become difficult for the survival of the organism, जिससे हम लोगों को डिफिकल्टी ना हो. अगर हम दूसरी बात करें इसी का, तो इसमें क्या रहता है कि दैट इज दीज एटमॉस्फेरिक गैसेस. आपको भी पता, ओजोन लेयर हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फियर में, जब एटमॉस्फेरिक के 5 लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, mesosphere, thermosphere and exosphere. Ozone is present in the stratosphere, that is the second layer, and this ozone is preventing the harmful UV radiations to reach on the surface of the earth.
तो एक यहाँ पे अब चाहे हमने तो ओजोन लेयर बनाया नहीं है, ठीक है, ना ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, ठीक है, एक जगह से हमने यूज़ किया, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और वो बाहर निकल गया हमारे नोज के थ्रू। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, दैट इज वी कीप ऑन हैविंग अ रिसर्च, ठीक है। कोई ज़रूरी था ओजोन वहीं पे रहता, कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में भी तो ओजोन कंसंट्रेट हो सकता था, ठीक है, क्यों एक लेयर ही बना। सो ऑल दीज are you can take the example of your, or you can think of the cosmos power, or the power which invisible power which is regulating the entire life forms on the surface of the earth, or entire phenomenons which are taking place on the surface of the earth. ओके, सो ये ओजोन लेयर हमें प्रिवेंट कर देता है, बचा लेता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो हमें स्किन कैंसर्स हो जाते, सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जल के ही मर जाते, बिकॉज यूवी रेडिएशंस आर वेरी वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट देम। आप इसी से समझ लीजिए कि ओजोन लेयर के होने के बाद गर्मियों में जब हम लोग धूप में जाते हैं तो वी फील वेरी हॉट एज वेल एज वी फील वेरी इरिटेटेड, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, वेदर यू आर इनसाइड योर होम्स और आउटसाइड द होम। सो जस्ट थिंक ऑफ द सिचुएशन कि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता तब कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता अर्थ का, ठीक है, बिकॉज इन दैट केस द सनलाइट वुड बी एबल टू फॉल डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे बीच में कोई रोकने वाला नहीं रहता फिर। ओके, सो दैट सिचुएशन वुड बी मच मोर वर्स एज कंपेयर टू नाउ। मूविंग अहेड विद दिस, we have okay, the last point, the earth exerts the right amount of gravitational force on objects to hold them close to its surface. This gravitational force also allows us to move freely. ठीक है, अब क्या है, ये एक बहुत ही है, पूरा आपका एक चैप्टर ही रहेगा, आपके 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। हमारी अर्थ, जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, Earth is exerting a force on each and every one of us that is known as your gravitational force. Gravitational force क्या काम करता है, जैसे न्यूटन्स और बहुत सारे साइंटिस्ट ने यही सोचा, दैट इज एक स्टोरी है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट आई होप दिस वाज द कंसेप्ट कि ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से एक एप्पल उसके सर पे गिरा, ओके, और उस या फिर उसके सर पे गिरा या उसके कहीं आसपास गिरा। सो ही स्टार्टेड अज्यूमिंग, ठीक है, उसने सोचना शुरू किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो गिर सकता था, ऊपर ही चला जाता, ठीक है, नीचे आने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने कई बार चीज़ों को ऊपर फेंका। तो हर केस में क्या होता है, ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो दैट कम्स डाउन। ओके, सो व्हाई इट इज़ कमिंग डाउन, इट इज़ कमिंग डाउन जस्ट बिकॉज सम ऑफ द फोर्सेस आर देयर, सम ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी और द फोर्स इज देयर विच इज़ पुलिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स। हम हमेशा अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में क्यों रहते हैं, बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग अस टुवर्ड्स इट्स ओन सरफेस एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हमें पता नहीं चलता है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली वी आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जब आप लिफ्ट में होते हो तब आपको समझ में आता है। ओके, व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, ओके, तो आपको क्या लगता है कि नीचे से आप कोई खींच रहा है और उसके अगेंस्ट आप ऊपर जा रहे हो। Okay, so that is what, that is nothing but the gravitational force which is trying to pull you towards itself, but machines की एनर्जी की वजह से आप उस ग्रेविटेशनल पुल को थोड़ा थोड़ा ओवरकम कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी गो अहेड, जैसे एक परमाणु था, परमाणु और पोखरण, ठीक है, ये सब कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, ठीक है, जो आप लोग देखिए, तो इसमें भी आप लोग के कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो भी सैटेलाइट्स या फिर हम लोग स्पेस शटल्स या फिर जो भी हम बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा मतलब एक टफ जॉब है या चैलेंज होता है कि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे उसको बाहर निकालें, ठीक है, क्योंकि अर्थ इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी और बढ़ता चला जाता है। ओके, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जब इसको आप ब्रेक कर जाते हो, और जब आप इसको ब्रेक कर देंगे तो आप ऊपर कहीं पे भी जा सकते हो। ओके, अनलेस यू कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर फोर्सेस, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ही स्पेस या फिर हमारे सैटेलाइट्स दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जैसा कि उसने बताया भी है, आप उस मूवी में देखोगे तो वो गलत कंसेप्ट नहीं है। जैसे जब हम शॉर्टपुट का नहीं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टपुट ही है, लेकिन बस वो राउंड शॉर्टपुट होता है कि जिसको शॉर्टपुट एक हम हाथ से भी फेंकते हैं,
बड़े बड़े आयरन के बॉल्स होते हैं, ओके, और कुछ हम स्प्रिंग्स में लगे होते हैं, ठीक है, उसको सीकड़ में लगे होते हैं और हम घूम करके फेंकते हैं, दैट इज ऑल्सो शॉर्ट पुट ओनली. तो इन दैट केस वाई द पीपल दे आर रनिंग मेनी नंबर ऑफ टाइम्स राउंड एंड राउंड, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो जाए, ठीक है, जिससे कि वो बॉल दूर तक जा सके. तो in the same way the satellites also they keep on revolving around the sun for longer period of time and automatically or just after certain period of time वो उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल जाते हैं एंड दे रीच इनटू द अदर planets. Okay, starting or going ahead with this, so all these are the 4 to 5 points if you remember. First one was water, second one was your soil, third is your atmospheric gases or the atmosphere, next is the right amount of heat and light, okay, and the exactly the last one, that is your gravitational force which is acting on the surface of the earth. Okay, now if we talk about the structure of the earth here, okay, I hope we don't have that much time, okay, but let me see here. Okay, already it's 26, we have time little bit. When we are talking about the structure of the earth, so in yesterday previous chapter also we have discussed little bit, that is the earth is like a spherical ball. The outer layer of the earth's crust or the outer layer of the earth is known as the crust. Below that layer, that is the central region, is called the core, and the region between the core and the crust, मतलब सबसे अंदर और सबसे बाहर के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होता है, that is known as your mantle. So the outermost is your crust, followed by mantle, followed by core. If we go ahead with the characteristics of some of them, so what you are able to find here is, that is crust when we are talking about, so it is the outermost rocky layer or surface of the earth on which continents and oceans exist. ठीक है, अब देखिए पानी भी क्या है, वो एक हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर ही फ्लो कर रहा है. अगर पानी एब्जॉर्ब हो जाता तो वो फ्लो नहीं कर पाता, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका है और अब और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता. दैट इज वाई द वाटर कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट कंटेन्स सॉइल एंड मिनरल्स नीडेड बाय द लिविंग थिंग्स, वो अभी हम लोगों ने एसेंशियल चीज में ही देख लिया. मैंटल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज द मिडल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स, मोल्टन मतलब पिघले हुए, ओके. Violent movements of this hot molten material results in volcanic eruptions and earthquakes on the crust. इसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जब आप लोग क्लास 8th में जाएंगे. सो यू हैव द चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना, उसमें आप लोग टेक्टोनिक प्लेट्स और अर्थ के क्या रीजंस हैं, क्यों नहीं वो हो रहा है, ठीक है, क्यों अर्थक्वेक्स आते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ आप लोग वहाँ पे पढ़ेंगे. The last part, that is the core, it is the deepest and the hottest layer of the earth. The outer part of the core or outer core is made up of molten iron and nickel. The inner core is like a hot solid ball made mostly of iron. Okay, तो सबसे अंदर क्या रहता है आपका, आयरन प्रेजेंट रहता है, and that iron due to the heat of the earth's core, that iron is completely present in the molten form. Okay, so this is there for today. Just try to do these checkpoints. Okay, tomorrow we'll be having the discussion and then after we'll be starting with the moon. Okay, so this was all for today. I hope you all would have understood, and I request you to please keep on having or please keep on doing the reading of the chapter, because if you're not going to read the previous portions what has been taught yesterday, you will not be able to understand today's explanation. And if I keep on starting from the first page, so it will take much longer time and it will be really difficult for me to complete the syllabus on time. So that is why it is my humble request. वैसे ही मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. So please do take care this thing, that is आप सबसे पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी आपका प्रीवियस पोर्शंस हैं, so that प्रीवियस पोर्शंस के ही बेसिस पे आपके आगे के भी एक्सप्लेनेशंस हैं. All right. So this was all for today. Thanks a lot for being with me. Have a superb day ahead. Thank you.